आज की वीडियो में मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 4 का पार्ट 2 जो कि हमारे बच गए थे ऐसे 510, 520, 530 एंड 550। ये चार ऐसेज बच गए हैं एंड बाकी की जो चैप्टर 4 के ऐसेज है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। एंड ऑल्सो गाइस मैं अब वीडियोस में कोई इंट्रो नहीं करने वाली हूँ, सीधा जो टॉपिक होगा वो एंड देन उसका वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और थोड़े से टाइम में चैप्टर हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो पहला ऐसे ऐसे 510, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे 510। सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इस स्टैंडर्ड में क्या होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि है ना, या तो जो प्रायर पीरियड के एफएस है वो ऑडिटेड ही नहीं है या फिर ऑडिटेड है बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय predecessor auditor is what is initial audit engagement refers to। ठीक है। then what are opening balance means? opening balance का मतलब क्या होता है? तो वो ऐसे balances जो exist कर रहे हैं at the beginning of the period, the balances which exist at the beginning of the period। now opening balance are based upon the closing balances of the prior period and reflects the effect of transaction and events of prior periods and accounting policies applied in the prior period। तो ओपनिंग बैलेंस में ऐसे मैटर्स भी इंक्लूड होते हैं जो रिक्वायर होता है डिस्क्लोजर ऑफ दैट एग्जिस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड सच एज कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ओके। प्रीडिसेसर ऑडिटर क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर एक ऑडिटर है फ्रॉम अ डिफरेंट फर्म जिसने ऑडिट किया द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी इन प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर। मतलब कोई दूसरा ऑडिटर जिसने पहले प्रायर पीरियड के ऑडिट जो एफएस ऑडिट किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको प्रीडिसेसर ऑडिटर बोलते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 510 का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस कंडक्ट ओपनिंग बैलेंस जो कंटेन करते हैं मिस स्टेटमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स दैट मटेरियली इफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ओपनिंग बैलेंस जो कंटेन करते हैं मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल इफेक्ट करते हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ओपनिंग बैलेंस कंटेनिंग मिस स्टेटमेंट्स, पहले तो हमको ऑब्टेन करना है ऐसा ऑर्डर एविडेंस कि कहीं ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो मटेरियली इफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या फिर जो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो रिफ्लेक्ट हुई थी इन द ओपनिंग बैलेंसेज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। जो मतलब प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंटिन्यू हो रही है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है करंट पीरियड में भी, या फिर अगर कोई चेंजेस है तो वो प्रॉपरली अकाउंटेड, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल financial reporting framework। तो appropriate accounting policies reflected in the opening balance have been consistently applied। reflected in the opening balance appropriate accounting policies जो reflect opening balances में जो consistently applied है in the current period's financial statement or changes thereto are properly accounted, adequately presented or disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework। तो दो ऑब्जेक्टिव है कि हमने को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है दैट वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन misstatements that materially affect the current period FS या फिर appropriate accounting policies reflected in the opening balance have been consistently applied in the current period's financial statements or changes thereto are properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework। Now, obtaining sufficient appropriate audit evidence about opening balances by the auditor। तो पहला जो हमने पढ़ा था ना कि ओपनिंग बैलेंस कंटेन misstatements that materially affect FS, उसमें ना हमको डिटरमाइन करना है वेदर द प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि जो प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वही करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो हमको डिटरमाइन करना है दैट वेदर प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि अगर प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस करेक्ट होंगे तभी तो ओपनिंग बैलेंस भी करेक्ट होंगे ना करंट ईयर के। सो दैट्स वाई तो डिटरमाइन करना whether the prior period's closing balance have been correctly brought forward to the current period or when appropriate any adjustments where appropriate any adjustments have been disclosed as prior period items in the current year's statement of profit and loss।
तो determine whether the prior period's closing balance have been correctly brought forward and where appropriate any adjustment have been disclosed as prior period items की तरह disclose कर दिया गया है any adjustments को disclosed as prior period items in the current year statements of profit and loss in the current year statement of profit and loss फिर determine करना whether opening balance reflect the application of appropriate accounting policies determine whether the opening balance reflect the application of appropriate accounting policies तो पहला तो है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो था ना ओपनिंग बैलेंस कंटेन विद स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट करंट पीरियड्स एफएस उसमें डिटरमाइन करना वेदर द प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली brought forward and where appropriate, any adjustments have been disclosed as prior period items in the current year's statement of P&L. And फिर determine करना whether the opening balance reflect the application of appropriate accounting policies. Determine करना whether the opening balance of reflect the application of appropriate accounting policy. ठीक है. Then परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म करना वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग अगर जो प्रायर पीरियड के एफएस है ना वो ऑडिट हो चुके हैं तो परस्यू करो कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द other relevant documents relating to the prior period financial statements तो प्रायर पीरियड के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो चुके हैं तो परस्यू करो कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर इवेल्युएट करो वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड्स प्रोवाइड evidence relevant to the opening balance तो evaluate करना whether audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balance या फिर specific audit procedures to obtain evidence regarding the opening balance या तो इवेल्युएट करना whether audit procedures performed in the current periods provide evidence relevant to the opening balance इवेल्युएट करो कि ऐसे audit procedure perform हुए in the current period जो provide करते हैं evidence relevant to या फिर perform करना specific audit procedures तो basically इधर current है तो cap और उधर perform करना SAP specific audit procedure SAP उधर करंट ईयर के करंट पीरियड का इधर परफॉर्म करना स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस तो वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं तो हमको परस्यू करना है कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर इवेल्युएट करो whether the audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balance या फिर perform करना specific audit procedures to obtain evidence regarding the opening balance to evaluate whether the audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balance or performing specific audit procedures to obtain audit evidence regarding the तो तीन चीजें हैं पहला तो डिटरमाइन करना कि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस जो करेक्टली बॉट फॉरवर्ड है तो करंट पीरियड और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर डिटरमाइन करना वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज या परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग where the prior period financial statements were audited, pursuing copies of the audit financial statement, including the other relevant documents relating to the prior period's financial statements. या फिर इवेल्युएट करना whether audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balance or performing specific audit procedures to obtain evidence regarding the opening balance perform करना specific audit procedures to obtain evidence regarding the opening balance. Now, if the auditor obtains audit evidence, the opening balance contain misstatement that will materially affect the current period financial statement, the auditor shall perform such additional audit procedures. Auditor को perform करना additional audit procedures as are appropriate in the circumstances to determine that the effect on the current period's FS. If the auditor conclude that such misstatements exist in the current period's financial statement, अगर auditor को conclude करता है कि such misstatement exist in the current period financial statement, तो auditor को communicate करना है misstatements को with management and those charged with governance. Now,
Procedures adopted by the auditor to obtain audit evidence regarding opening balances. Next, nature and extent of audit procedures. The nature and extent of audit procedures necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balance depend on such matters. Accounting policies followed by the entity, significance of opening balance relative to the current period's financial statement, whether prior period's financial statement were audited, if so whether the predator's auditor's opinion was modified, the nature of the account balance, classes of transaction disclosure, and the risk of material misstatement in the current period's FS. तो पहला accounting policies followed by the entity, and if the financial prior period financial statements were audited, whether it is audited by predecessor opinions was modified, and the nature of account balance, classes of transactions disclosure, and the risk of material misstatement in the current period's financial statements. The accounting policies followed by the entity, accounting policies followed by the entity, nature of account balance, class of transaction disclosure, and the risk of misstatement in the current period's financial statement, significance of the opening balances relative to the current period's financial statements, whether the prior period financial statement were audited, and if so whether the predecessor auditor opinion was modified. So accounting policies followed by the entity, nature of the account balance, classes of transactions and disclosure, and the risk of material misstatement in the current period's financial statement. Accounting policies followed by the entity, nature of account balance, class of transaction disclosure, and the risk of material misstatement in the current period's financial statement. Significance of the opening balance related to the current period's financial statement, whether the prior period financial statement were audited, and if so, whether the predecessor auditor's opinion was modified. If the prior period financial statements were audited by predecessor auditor, तो अगर prior period के जो financial statement वो audited होते हैं by predecessor auditor, तो auditor may be able to obtain sufficient appropriateness regarding the opening balance by pursuing the copy of the audited financial statements, including the other relevant documents relating to the prior period financial statements, such as supporting schedules to the audited financial statements. Ordinarily, the current auditor can place reliance on the closing balance. The current auditor can place reliance on the closing balance contained in the financial statements for preceding period, even except when during the performance of audit procedures for the current period and the possibility of misstatements in opening balance is indicated. तो ऑब्जर्व करना करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइल करना उसको ओपनिंग इन्वेंट्री काउंट से, फिर परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स, फिर परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ, परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर ग्रॉस प्रॉफिट या कट ऑफ पे, या फिर परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स, ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स, या ऑब्जर्व अ करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइल इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज. Observe करना current physical inventory count and reconcile it to the opening inventory quantities, perform audit procedures on the valuation of the opening inventory items, performing audit procedures on the gross profit and cut off. Observing a current physical inventory count and reconcile it to the opening inventory quantities, perform audit procedures on the valuation of the opening inventory items, perform audit procedures on gross profit and cutoff, observing a physical inventory count and reconciling it to the opening inventory quantities, observe करना current physical inventory count को और फिर उसको reconcile करना opening inventory count, फिर perform करना procedures on the valuation of the opening inventory items, फिर perform करना audit procedures on gross profit and cutoff.
For non-current assets and liabilities. For non-current assets and liabilities such as property, plant, equipment, investment and long-term debt, some evidence may be obtained by examining the accounting records and other information underlining the opening balance. तो property, plant, equipment that is PP, investment या फिर LTD लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना है एग्जामिन करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या अदर इन्फॉर्मेशन अंडरलाइनिंग द ओपनिंग बैलेंस. अब इन सर्टेन केसेस द ऑडिटर मे बी एबल टू ऑब्टेन some audit evidence regarding opening balance through confirmation with third parties. So in certain cases the auditor may be able to obtain some audit evidence regarding the opening balance through confirmation with third parties. Through confirmation with third parties. Confirmation with third parties if examine karna accounting records and other information underlining the opening balance. Consistency of accounting policies relating to opening balances. Now, the auditor shall obtain audit evidence about whether the accounting policy reflected in the opening balance have been consistently applied in the current period's affairs and whether changes in the accounting policies have been properly accounted for, adequately presented and disclosed. If the auditor concludes that the current period's account not consistently applied into the opening balance in according with the तो change in accounting policy not properly accounted ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हो. पहला तो ये होता है कि करंट पीरियड में कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी, तो अगर वो भी नहीं हुई तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमको उसको अकाउंटिंग प्रेजेंट करना होता है, एडिक्वेटली प्रेजेंट करना होता है, प्रॉपरली अकाउंट करना होता है, दैट इज़ प्रॉपरली अकाउंटेड, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज करना होता है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से. तो अगर वो भी नहीं हुआ हो तो हमको अपना ओपिनियन जो है मॉडिफाई करना होगा. शेल एक्सप्रेस क्वालिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, qualified or adverse opinion as per essay 705. essay I'm not good at it guys. essay 705 क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देते हैं अगर ये दोनों ही नहीं हुआ होता है तो. Reporting by the auditor with regard to opening balance. तो if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence regarding the opening balance तो modify कर देंगे इसमें qualified या disclaimer of opinion. उसमें qualified या adverse था, अगर accounting balance से related तो qualified या adverse. अब इसमें क्या obvious सी बात है कि अब अगर हमको evidence ही नहीं मिला है, एविडेंस ही नहीं मिल रहा तो वही आएगा अपना क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर वाले. क्वालिटिव अगर मटेरियल हो परवेसिव नहीं हो तो, और मटेरियल और परवेसिव दोनों हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिस स्टेटमेंट. अब इसमें क्या है, इसने वापस बोला कि इसको जो ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो क्वालिफाइड और एडवर्स आ जाएगा. एडवर्स व्हेन मटेरियल एंड परवेसिव बोथ एंड क्वालिफाइड व्हेन मटेरियल एंड नॉट परवेसिव. तो वो हमको एविडेंस मिला या नहीं मिला उसके बेसिस पे डिफाइन हो जाएगा ऐसे 705 का. नाउ यहाँ हमारा जो है ऐसे 510 कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऐसे 550. और ऐसे 550 को मैं बस थोरोली रीड करने वाली हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है, ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा याद करा जाए. तो शुरू करते हैं. डील करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली इफ अप्लाइज इन रिलेशन टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस. तो डेफिनेशन क्या है रिलेटेड पार्टी की? रिलेटेड पार्टी जो है डिफाइन की गई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में या फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अप्लाई कर रहा है मिनिमम और नो रिलेटेड पार्टी. तो अ पर्सन और अदर एंटिटी जिसका कंट्रोल और सिग्निफिकेंट influence or directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity. रिलेटेड पार्टी क्या हो सकती है? ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसका सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू एनी इंटरमीडियरी ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी. तो रिपोर्टिंग एंटिटी पे किसी पर्सन और अदर एंटिटी का कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू ओवर वन और मोर इंटरमीडियरीज, तो वो एक रिलेटेड पार्टी है. या फिर एक रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका जो है ना एंटी ओवर विच एक ऐसी एंटिटी जिसपे रिपोर्टिंग एंटिटी का जो है कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो भी रिलेटेड पार्टी होगी. तो पहली रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है कि एक ऐसा पर्सन या एंटिटी
जिसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, या फिर एक ऐसी एंटिटी जिस पे रिपोर्टिंग एंटिटी का जो है ना कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। अब एक ऐसी एंटिटी जो अंडर ए कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट। तो अब कोई ऐसी दो एंटिटी जिसमें मतलब एक ऐसी एंटिटी है जो कॉमन कंट्रोल रिपोर्टिंग एंटिटी के कॉमन कंट्रोल में है, ठीक है, जैसे कि उन दोनों का कॉमन की मैनेजमेंट है, या फिर जो दोनों एंटिटी है ना उनके ओनर्स फैमिली मेंबर्स है, या फिर कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है। तो तीन रिलेटेड पार्टीज वापस मैं रिपीट करती हूँ। एक पहली रिलेटेड पार्टी है कि ना एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है, या फिर एक ऐसी एंटिटी जिस पर रिपोर्टिंग एंटिटी का जो है डायरेक्ट या सॉरी कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, या फिर एक ऐसी एंटिटी जिसपे जो जो है अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसपे रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉमन कंट्रोल। अब कॉमन कंट्रोल क्या हो गया कि कॉमन ओनर्स जो है उसके वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या फिर कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट। However, entities that are under common control by a state, that is a national, regional, local government, are not considered related unless they engage in significant transaction or share resources to a significant extent with another auditor. Meaning of control and significant influence in reference to related parties. Many financial reporting frameworks discuss the concept of control and significant influence. They generally explain that control is the power to govern the financial and operating activities of an entity so as to obtain benefits from its activities. तो control एक power है to govern the financial and operating activities of an entity. Control is the power to govern the financial and operating activity policies of an entity as to obtain benefits from its activities. So a control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. या फिर significant influence क्या होगा, which is may gained by share ownership, stature और एग्रीमेंट, पावर टू पार्टिसिपेट। अब कंट्रोल में तो है ना पावर है गवर्न करने की, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पावर है पार्टिसिपेट करने की। तो पावर टू गवर्न, कंट्रोल इज बेसिकली द पावर टू गवर्न, ठीक है, और इसमें पावर टू पार्टिसिपेट है, पावर टू पार्टिसिपेट। और वही फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ एन एंटिटी बट इज नॉट कंट्रोल ओवर दोज पॉलिसीज। तो कंट्रोल इज द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, and significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an entity but not to control over those policies. The existence of the following relationship may indicate the presence of control or significant influence. Direct or indirect equity holding or other direct or indirect equity holding or other financial interest in the entity की holding of direct or indirect equity or other financial interest in other entities, being part of those charged with governance or key management, those members of management who have authority and responsibility for planning and controlling the activities of the entity. So being part of the those charged with governance or key management, that is those members of management who have the authority या फिर क्लोज मेंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस। अब रिलेटेड पार्टीज विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का क्या मीनिंग है? Related party by virtue of their ability to exert control or significant influence may be in a position to exert dominant influence over the entity or its management. Consideration of such various limits for identifying and assessing the risk of understatement due to fraud. Now, in some circumstances, entity may be related party of the entity. Related party of the entity हो सकता है
even if the entity owns controls none of the special purpose entities. Now, many related party transactions are in the normal course of business and such circumstances they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statement similar transactions with related parties. However, the nature of related party relationship and transactions may in some circumstances give higher risk of the material misstatement. Okay. Now, related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures. The corresponding information system may be ineffective. Understanding the interrelated transaction. The auditor shall inquire of management. Auditor को inquire करना management को entity के identify the entities related parties including changes from the prior period. तो auditor को inquire करना है of management regarding the identity of the entities related party and including the changes prior period changes या फिर entity की related party या फिर nature of relationship between the entity and related parties nature of relation between the entity and related parties तो nature of relationship between the entity and related parties nature of relationship between the entity and the related parties whether the entity entered into any transactions, whether the entity entered into transactions with these related parties during the period, and if so, the type and purpose of the transactions. The auditor shall inquire of management others with an entity to perform other risk assessment procedure considered appropriate to obtain an understanding of the controls. तो यहाँ हमारा जो है ऐसे 550 भी कंप्लीट हो जाता है. यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन मतलब इतना कुछ खास नहीं है. नाउ essay 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मीनिंग पढ़ेंगे हम. पर्पस एंड टाइमिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अरे 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 investigating the results, reliance on analytical procedures. Okay. अब है ना, since routine checks cannot be depended upon to disclose all the mistakes and manipulations that may exist in accounts, certain other procedures also have to be applied like comparisons, trend, ratio analysis, in addition to reasonable tests. These collective known as overall test. अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन क्या है? इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेशनशिप टू एनालाइज द पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. Analytical procedure also encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount. Yeah, ऐसे evaluation of financial information through analysis of possible relationship among both financial and non-financial data. Analytical procedure also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationship that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount. अब वेरीफाई करना टोटल वेजेस पेड टू वर्कर्स. इट कैन बी वेरीफाइड बाय एनालिसिंग रिलेशन बिटवीन वेजेस पर वर्कर. तो वेजेस पर वर्कर जो फाइनेंशियल डेटा होगा एंड नंबर ऑफ वर्कर्स नॉन फाइनेंशियल डेटा. अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूडेड है? कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज का एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड वेरियस अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो एनालिटिकल प्रोसीजर में तीन चीज़ें इंक्लूडेड है. कंपैरिजन ऑफ एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड वेरियस अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो कंपैरिजन ऑफ एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल पीरियड. देखो कंपैरिजन ऑफ
entities financial information, comparable information for prior periods, budgets, forecast, expectations. तो प्रायर पीरियड के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, एंटीसिपेट रिजल्ट ऑफ द एंटिटी दैट इज बजट्स फोरकास्ट एंड expectations, anticipated results of the entity that is budgets forecast और expectations या फिर similar industry information को compare करना, similar industry information such as comparison to the entities ratio of sales to account receivable, industry averages or other entities of comparable size in the same industry. Now, consideration of relationship के क्या example है? Among elements of FS expected to conform to predicted pattern that is gross margin percentage and between financial and relevant non-financial information such as payroll cost to number of employees consideration of relationship among elements of financial statements expected to conform to predictable pattern, elements of FS expected to conform to predictable pattern, elements of FS expected to conform to predictable pattern between financial and relevant non-financial information such as payroll cost to number of employees and various other audit procedures. Now, अब हमको है ना कंपेयर करना है क्लाइंट डेटा को। तो पहले तो हम क्लाइंट डेटा को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री डेटा से, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा एंड इंडस्ट्री डेटा। फिर क्लाइंट डेटा विद ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फिर क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या क्लाइंट डेटा विद सिमिलर प्रायर पीरियड या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा एंड industry data, comparison of client data and industry data, comparison of client data and industry data, then comparison of client data with client determined expected results, comparison of client data with the auditor data and expected result using non-financial data and client data with similar prior period. So comparison of client data and industry data, client data with similar prior period data, client data with client determined expected results, client data with auditor determined expected results is segregated into the following analytical procedures. And client data with expected results using non-financial data. अब स्कोप क्या है एस ए 520 का? डील करता है यूज ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड एज प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्टेन करना रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना इज द स्कोप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करना रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑब्टेन करना रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। When using substantive analytical procedures, then also design and perform करना analytical procedures, design and perform analytical procedures near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का ऑब्टेन करना रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फिर डिजाइन एंड परफॉर्म करना एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट जो असिस्ट करते हैं ऑडिटर को व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन दैट असिस्ट ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन as to whether the financial statements are consistent with auditors understanding of the entity to obtain करना relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedures, then
Design and perform करना analytical procedures near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity. Purpose and timing. Purpose and timing of analytical procedures. तो purpose of audit procedure क्या है? Use करना comparisons and relationship to assess whether account balance and other data appear reasonable. तो comparison and relationships का use करना to assess करने में कि account balance और data जो है वो appear कर रहा है reasonable, appear reasonable. तो हमको पहले तो कंपेयर करना है प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी पीएनएल अकाउंट को विद करंट पीरियड पीएनएल. वो बताएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट. देन हमको ट्रेडिंग एक्सपेंस अकाउंट करना है. तो if balances including the statement of the entity are compared with prior statement of P&L of an entity compared with in prior previous period, it would be possible to find out reasons for increase and or decrease in the profits and amount of those years. Increase and decrease in amount of profits of those years. Then, by setting up certain expense ratio on the basis of P&L, including in items of P&L for year under audit, comparing them with some ratios for year, it is possible to ascertain the extent of decrease or increase in decrease of expenses. If differences are found material, अगर differences material होते हैं तो हमको ascertain करना है उनके reason और assess करना है कहीं accounts manipulated तो नहीं है to inflate or suppress profit. Whether accounts are manipulated to inflate or suppress profits. It would be possible to identify unusual transactions, amounts, ratios, and trends that might indicate matters having audit implications. So it would be possible to identify existence of unusual transactions, amount, ratios, trends that might indicate matters having audit implications. Independent verification of correctness of some items of expense included in P&L. So independent verification of correctness of some items. So for instance, cost of importing goods which are subjected to L bedroom duty at uniform rate. Cost of importing goods which are subjected to L bedroom duty at uniform rate can be verified from amount of duty paid. Similarly, a quantity of sugar to be sold बाय शुगर मिल या फिर डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप विद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. इनकम एंड एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप विद अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स. देन कमीशन पेड टू मैनेज या फिर आइडेंटिफाई करना एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस अमाउंट्स. हाँ और आइडेंटिफाई करने रोमम आइडेंटिफाई करना स्पेशली ड्यू टू फ्रॉड. नाउ टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स तीन फेजेस में होता है. कंप्लीशन, planning testing and completion. Three phases: planning, testing and completion. Auditor substantive audit procedures at assurance level may be TODAS, substantive audit procedures, or combination of both. The decision is based on the auditor's judgment about expected effectiveness and efficiency of available audit procedures to reduce audit risk at the assertion level to an acceptably low level. Inquire करना management से as to whether the availability and reliability of information needed to apply substantive analytical procedures and results of any such analytical procedures performed by the entity. अब फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. कौन से फैक्टर्स जो है कंसिडर किए जाएंगे फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स? तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिससेग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ एक्शन, इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग. तो availability of data, disaggregation, account type, source, predictability, account type, source, predictability, account type, source, predictability, account type, source, predictability, account type, source, predictability.
तो disaggregation, availability of data, disaggregation, account type, source, predictability, nature of assertion, inherent risk of what can go wrong, nature of assertion, inherent risk of what can go wrong, nature of assertion, inherent risk of what can go wrong, nature of assertion, inherent risk or what can go wrong, availability of data, disaggregation, source, predictability, account type, nature of assertion, inherent risk of what can go wrong, inherent risk of what can go wrong. तो availability of data, disaggregation, account type, source, predictability, nature of assertion, inherent risk of what can go wrong. तो हम availability of data तो जो availability and relevant and related data facilitate करता है effective and analytical procedure. तो रिलेवेंट और रिलायबल डेटा जो अवेलेबल होता है वो फैसिलिटेट करेगा इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को. तो मतलब जो बेसिकली यही कह रहा है कि रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए डेटा, तभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो इफेक्टिव हो पाएंगे. देन degree of disaggregation in data, degree of disaggregation in data, degree of disaggregation in data, degree of disaggregation in data can directly affect the degree of its usefulness in detecting misstatement. तो डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन ही डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस को. तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा में तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा फैसिलिटेट करते हैं effective analytical procedures, facilitate effective analytical procedures. या फिर डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन डेटा डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ यूजफुलनेस टू डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स. अकाउंट टैप सैप आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैन अदर्स. तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है ना मोर यूजफुल होते हैं फॉर सम टाइप ऑफ अकाउंट्स दैन अदर्स. Substantive analytical procedures are more useful for some type of accounts than others. For are more useful for some type of accounts than others. Substantive analytical procedures are more useful for some type of accounts than others. Then source. Some class of transaction tend to be more predictable because they consist of numerous similar transactions through routine process. Some COTs tend to be more predictable because they consist of numerous similar transactions. Now predictability. SAP are more predictable, more appropriate when an account balance or relationship between items of data are predictable. SAP more appropriate होगा जब account balance of relationship between items of data, account balance और relationship between items of data are more predictable. तो SAP तभी ज़्यादा effective या reliable होगा जब appropriate होगा जब जो अकाउंट बैलेंस और डेटा के बीच में रिलेशनशिप है वो मोर प्रिडिक्टेबल है. SAP may be more effective in providing evidence for some assertions. When we are designing audit procedures to address the inherent risk of what can go, we consider nature of problem in order to determine if a SAP can be used to obtain audit evidence. When inherent risk is higher, may design TODS to address higher inherent risk. When significant risk identified, audit evidence obtained solely from SAP is unlikely to be sufficient. अब टेक्निक्स अवेलेबल है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो चार तरह की टेक्निक्स है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड रीजनेबलनेस टेस्ट. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, structural modeling, trend analysis, structural modeling, trend analysis, structural modeling, trend analysis, structural modeling, trend analysis, structural modeling, ratio analysis and reasonable test, ratio analysis and reasonableness test. तो ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. तो ट्रेंड एनालिसिस में से हम प्रीवियस ईयर को करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फ्लक्चुएशंस,
by comparing identify fluctuations by comparing current years का info current year to previous year information और रेशियो एनालाइज में एनालाइज करेंगे एसेट एंड लाइबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एसेट एंड लाइबिलिटीज एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस asset and liability as well as revenue and expenses asset and liabilities as well as revenue and expenses ठीक है एनालाइज करेंगे एसेट लाइबिलिटी को रेवेन्यू और एक्सपेंस को तो कॉमनली यूज रेशियोज एलिमेंट्स ऑफ इनकम और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी लिवरेज नाउ रीजनेबलनेस टेस्ट अब रीजनेबलनेस टेस्ट में ना unlike trend analysis, this analysis does not rely on events of prior periods but upon non-financial data for prior period. तो non-financial data का reasonable test में होगा. That is interest expense against interest bearing obligations, raw material consumption, production quantity, wastage and scrap. Now structural modeling. Structural modeling में modeling tool constructs model from financial and non-financial data of prior period accounts to predict current account balances. Example linear regression. अब analytical procedures to be applied as substantive tests. Analytical procedures to be applied as substantive test as per SA 330. तो determine करना suitability, relevance, reliability suitability, reliability of data, expectation of recording amount और फिर determine करना है any amount का difference. तो यहाँ हमारा जो है ऐसे 520 भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू तो हम ऐसे 530 के लिए अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. तो इस वीडियो में मैंने कवर किया ऐसे 510 ऐसे 550 एंड 520. तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो. अगर वीडियो थोड़ा भी इफेक्टिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि ऑडिट के सारे चैप्टर्स के मैराथन्स जो है मैं पोस्ट करने वाली हूँ सुपर सून मे बी आज या कल तक में ही. सो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप और कौन से वीडियोस मुझसे एक्सपेक्ट करते हो. कॉस्टिंग एफएम ग्रुप 2 के कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो कोई भी टॉपिक मुझे कमेंट्स में बता देना. तो बाय बाय गाइस.